हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अभी कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएमयू एमबीए का 2025 का इंग्लिश का पोर्शन। ओके, नाउ दिस पोर्शन वाज एक्सट्रीमली गुड इन वेटेज। We start from question number 51, which is firstly a comprehension passage. Now, how do we handle a comprehension passage? We are going to also discuss the techniques that you could use to minimize your time that it could take while solving the questions. Okay, so before this is something that I have also advised to the students who have taken regular courses in the Abhi concept classes, that whenever you have an unseen passage before you, do not start with reading the passage, because sometimes what happens that there are difficult words in between. You might not register them instantly, and you might waste a few more seconds on them. So how we will go about the unseen passages? We are first going to see what is the nature of question asked. Okay, so the first question asked is that which statement is correct about brain hormone oxytocin. So in the passage we are going to focus on oxytocin. Another is, what is this conclusion about nasal spray study? That is what we will see. Okay, when we read the passage, we will be reminisced with the questions also. Okay, then next is, which is not mentioned. So we know what will be mentioned when we will read the passage, and it is asking the meaning of the word bolster from the passage. Okay, so we have four questions from the passage, and now we will go back to the passage and we will see what these questions could mean, how will we solve them. Okay, so the passage says, most mental health disorders in case of drug abuse tend to diminish a person's ability to recognize other person's feelings. A recent study in Norway suggests, however, that these effects can be bolstered. We wanted the meaning of this term. We will see this. However, that these effects can be bolstered by a nasal spray puff of the brain hormone oxytocin. So it is suggesting कि जिन लोगों को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं या ड्रग अब्यूज का केस है, वहां पर नेजल स्प्रे, ऑक्सीटोसिन के नेजल स्प्रे से इस इफेक्ट को बोल्स्टर किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है, बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज लिंक्ड विद इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ काम एंड सोशल बॉन्डिंग. सो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन जो है solve ho gaya. Okay, meaning of the word bolster will be diminished. That is how you are exactly going to solve question in your paper. Okay, now going further, although oxytocin is already prescribed for certain disorders that affect social functions such as autism, these treatments are often tried in isolated cases, leaving the overall effects of the drug without evaluation. That ये use तो किया जाता है, लेकिन हर केस में अलग तरीके से यूज किया जाता है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट हमें नहीं पता है. ओके, द नॉर्वेजियन एक्सपेरिमेंट focused on 40 students, each of whom was given either a dose of salt water or the drug oxytocin. And after the nasal dose of oxytocin, students were shown faces of happy, angry, or neutral expression, some of which were subtler than others. The researchers found that after a nasal spray dose of oxytocin, the students' awareness of expression was intensified. Experiments showed that oxytocin had greatest effect on those who were least able to evaluate emotions without the given control. Although the result of this study seemed promising, the lead scientist in the investigation cautions that the hormone would not be a cure-all for mental illness or drug addiction. Rather, he suggests that the hormone might help some individual better interpret the social cues from the world around them. Now, this is about oxytocin, how oxytocin reacts, though overall effects are unevaluated, but it is helpful in making people aware about interpretation of social cues. Okay, this is the whole scheme of the passage. Now, first question is saying, the author of the passage would most likely agree with which of the following statement? First statement is, its overall effect require further evaluation. This is a right statement. In the future, it will be used to cure mental illness and drug addiction. It is not mentioned anywhere in the passage.
इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी एबल टू इंटरप्रेट सोशल क्यूज, ऐसा भी नहीं लिखा है क्योंकि दिस इज इंटेंसिफाइंग ह्यूमन कॉग्निशन ऑफ इमोशंस, सो सी इज ऑल्सो नॉट राइट। इट इज मोर इफेक्टेड व्हेन डोज्ड वाया नेजल देन ओरली, ऐसा भी कुछ पैसेज में मेंशन्ड नहीं है। सो इन केसेस में हम ये देखते हैं कि मोस्ट रिलेटेबल पैसेज से क्या है, वो हमारा ऑप्शन ए है, बिकॉज ऑल अदर सेंटेंसेस are not touched upon in the passage. Okay, so 51 का answer is A. Coming to 52, they are asking कि क्या conclusion है जो 40 लोगों पर study की गई है। ठीक है, पहला क्या है, results are inconclusive because sample size is not substantial। ये गलत है क्योंकि हमारे पास conclusion है दैट बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, इंटेंसिफाइड वे में रिस्पॉन्ड किया। सेकंड है नेजल स्प्रे ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ काम एंड सोशल बॉन्डिंग, द आंसर इज नो, बिकॉज व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन स्टूडेंट्स इट इंटेंसिफाइड देयर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग rather than social bonding. Okay, so this also is not mentioned. Many students were unable to recognize the expression. Okay, ऐसा भी नहीं था because students were able to recognize the expression, so this option also became wrong। जब तीन ऊपर के wrong हो गए तो ultimately D will be correct, but let's read it। The students who might need oxytocin most are the ones who appear most responsive to the hormone, who appear most responsive to the hormone। Okay, स्टूडेंट्स जिनको ऑक्सीटोसिन की नीड है, they are the ones who could be most responsive to the hormones। Okay, now we go ahead, we come to question number 53। 53 is which of the following is not mentioned, please focus on the word not mentioned। जो mentioned नहीं है वो हमारा सही आंसर होगा। Okay, is it clear? I hope it is clear to you। Now going next, the study showed that oxytocin made students more able to distinguish faces from one another। A controlled dose of salt water was used to gauge normal students' ability to recognize facial expression. This is right। Students who participated in the study were shown happy, angry, or neutral faces. This is right। Oxytocin had the greatest effect on the students who were least able to evaluate emotions properly when given the control dose। This is right, so this A becomes the right answer because this is not mentioned in the passage। Okay, this statement is not there, and 54 we had already solved। Now we come to error spotting। 55th question number is about spot the error। इनमें से कौन से सेंटेंस में एरर है? इफ आई वुड हैव रियलाइज व्हाट अ बैड शेप यू आर इन, आई वुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यानी कि रियलाइज्ड, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, हमारे पास एक ही ऑप्शन था, फर्स्ट अपने आप में गलत है क्योंकि टेंस गलत है, हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, एंड रियलाइज फर्स्ट फॉर्म है, रियलाइज का थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड है। सो फर्स्ट बिकम्स द रॉन्ग आंसर, the error sentence, the sentence with error। Okay, so A is the correct answer here। Again we have error, I offered him part-time work, this is right, but he turned it over saying that he would rather wait for a full-time job। It is not turned it over, it is turned it down। किसी चीज को मना करने को बोला जाता है आई टर्न्ड इट डाउन। टर्निंग ओवर का मतलब है टर्न ओवर, हम क्लास में टीचर्स हमें बोलती थी टर्न ओवर द पेज, टर्न ओवर टू नेक्स्ट पेज। ओके, सो टर्न ओवर का मतलब है पलटना, टर्न इट डाउन का मतलब है मना कर देना। ओके, सो बट ही टर्न्ड इट डाउन यहाँ पर सही होगा, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन में एरर है। सो द आंसर इज डी इन दिस केस। Now coming to question number 57, fill in the blank with the most appropriate option। All the children partook dash the lunch after taking the examination। Okay, all the students partook to the lunch, of the lunch, by the lunch, in the lunch। It is in the lunch। Okay, सारे बच्चों ने lunch लिया after taking the examination। Okay, all the children partook in the lunch
आफ्टर टेकिंग द एग्जामिनेशन। ज्वाइन करना, पार्ट टू का मतलब होता है टू ज्वाइन। ओके, सो दे ज्वाइंड, टू ऑफ बाय नहीं होगा, इन होगा, लंच में सबने ज्वाइन किया। ठीक है, सो यहाँ पर 57 में राइट ऑप्शन विल बी योर डी। Now coming to question number 58, again we have a fill in the blank, we have a double fill in the blank. He promised to stand beside me डैश, स्टैंड डैश मी डैश थिक एंड थिन। ओके, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ थिक और थिन में खड़ा रहेगा। सो ही इज प्रॉमिस टू स्टैंड बिसाइड मी इन थिक एंड थिन। ओके, हम कहते हैं ना कि ही हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी इन थिक एंड थिन। सो यहाँ पर थिक एंड थिन से पहले इन आएगा और साथ खड़े रहने को हम बिसाइड कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर। ओके, now going next is a flippant remark. Okay, यहाँ पर हमसे मेन पूछा जा रहा है कि what is the meaning of flippant. फ्लिपेंट रिमार्क का मीनिंग है ऐसे ही कैजुअली किसी को रिमार्क पास कर देना, सीरियस होके बात ना करना, या फिर डिसरिस्पेक्ट शो करना। ओके, सो यहाँ पर lacking in seriousness is the right answer, that a flippant remark is the one where we cannot trace seriousness. Again we have question number 60, fill in the blank. Choose the correct option. You dash because you dash too fast. Okay, you will be stopped because you were driving too fast is not correct grammatically. You have been stopped because you drove too fast is also not correct, because have been के साथ stopping आता है. Okay, you would stop because you had driven too fast is also not grammatically correct. You were stopped because you were driving too fast is the right answer. It is grammatically correct, okay, according to the tenses. Now going forward, question number 61 is again choosing the correct option to fill up the blank. Not again. This is the third time that I lost my keys. Okay, I have lost my keys since I left home this morning. This is the third time that I have lost my keys since I left my house, because all other options are incorrect. Am losing, this is the third time that I am losing my keys since I was leaving is grammatically incorrect. Had lost इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर is है। ओके, is का मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ओके, एंड मैं अपनी कीज खो चुकी हूं, तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज होगा, इसीलिए डी इज मेकिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Now going forward, 62 is also on tenses. When I saw the doctor, I dash I could visit her. Okay, when I asked the doctor, I asked if I could visit her. जब मैंने डॉक्टर को देखा तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। Okay, I asked if I could visit her. So this is the most appropriate answer. बिकॉज आप किसी से मिलेंगे तो उनसे आप पूछेंगे ही ना कि हम आपसे कब मिल सकते हैं। आप इन्फर नहीं कर सकते। इन्फर का मतलब होता है किसी चीज को इन्फर करना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को जोर देकर बोलना कि आई वॉन्ट टू मीट यू, आई इंसिस्ट आई वॉन्ट टू मीट यू। एंड फॉर अ डॉक्टर वी विल नॉट यूज द टर्म वॉन्टेड। ओके, आई वॉन्टेड whether I could visit her is the very incorrect option. So 62 का यहाँ पर ऑप्शन है C. 63. Choose the correct option to fill in the blank again. It is 5 months since we dash to this company. 5 महीने हो गए जब से हमारा ट्रांसफर हुआ है. It is 5 months since we have been यहाँ, since we were transferred. 63 का C. Since we were transferred to this company, it has been 5 months. Okay. Now यहाँ पर have been transferred और had been transferred नहीं आएगा. Were transferred is the right answer. Have इसलिए नहीं आएगा basically because 5 महीने हो चुके हैं. Okay. So have been transferred is incorrect. Had been transferred is incorrect. Were transferred is the correct option. Going further, 64.
choose the correct option to fill in the blank again. He dash of retiring until he dash enough to afford a life abroad after retirement. उसने रिटायर होने का नहीं सोचा है जब तक वो अच्छा खासा सेव ना कर ले. यहाँ पर हमें ऐसा सेंस बनाना है इस सेंटेंस का. ओके, he has not thought, this is grammatically incorrect. He hasn't thought of retiring until after he will save enough to afford. This is grammatically wrong. Okay, he is not thinking of retiring until after he has been saving enough. This also is grammatically wrong. He won't think of retiring until after he is saving enough to afford. This is also incorrect grammatically. He doesn't think of retiring until after he has saved enough to afford a life abroad. This goes grammatically correct. So D is the right answer. Going forward with question number 65. Whenever he refers to his favorites, he is voluble. But when he talk of his adversaries, he is dash. Now यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही हमारे पास 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग काफी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा. ओके, वॉल्यूबल का मीनिंग होता है विद ग्रेट एनर्जी एंथुसियाज्म. जब हम किसी फेवरेट की बात करते हैं अपने, हम कितने अच्छे से बात करते हैं. एडवर्सरीज का मतलब है जो दुश्मन हो या जो आपके अगेंस्ट हो या जो आप जिनको पसंद ना करते हो. ओके, सो when he talk of his favorites, he is voluble, but when he talk of his एडवर्सरीज, ही इज, यहाँ पर वॉल्यूबल का ऑपोजिट मीनिंग आना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 4 वर्ड्स हैं. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज काफी स्टूडेंट्स को रेटिसेंट का मीनिंग ही नहीं पता होगा. ओके, रेटिसेंट का मीनिंग होता है कि चुप हो जाना, शांत हो जाना, या अपने मन की बात को रिवील ना करना. सो जब कोई अपने फेवरेट्स के बारे में बात कर रहा है, वो बहुत चीयर्ड अप, एंथुसियास्टिकली बात कर रहा है, खुश होके बात कर रहा है. बट जब कोई अपने एडवर्सरीज की बात कर रहा है, वो उस टाइम पे चुप हो जाता है, रिवील नहीं करता कि क्या इंटेंशन है. ओके, so with voluble, reticent goes as a good antonym. That is why reticent here is the correct option. Because voluble का opposite bitter नहीं है, rough नहीं है, aggressive नहीं है. Reticent matches the tone and antonym of voluble, so we will choose reticent here. Okay. Now going forward, question number 66. The appropriate word used for marriage between people of different races is miscegenation. Okay, this is miscegenation. You can just recall it and remember it. Okay, but now what is the meaning of other words? The in questions में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको बाकी meanings का idea हो जाता है. Okay, so now first word is scurrility. Scurrility का meaning होता है ऑफेंसिव लैंग्वेज को यूज करना. ओके, बिल्कुल ऐसे बात करना कि किसी के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हो जाए. देन नेक्स्ट वर्ड इज नॉन सेक्विटर. सेक्विटर का मीनिंग होता है किसी बात का सेंस बनना. नॉन सेक्विटर का मीनिंग है कि ऐसा कंक्लूजन जो लॉजिकल ना हो. ओके, दैट इज नॉन सेक्विटर. एम्बोलिज्म का मीनिंग होता है, थर्ड वर्ड इज एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म क्या होता है कि जनरली it is basically blockage. जनरली इस वर्ड को हम बायोलॉजिकली यूज करते हैं कि जब कहीं पे ब्लॉकेज आ जाती है किसी ब्लड वेसल में, सो ब्लॉकेज इज एम्बोलिज्म. ओके, नाउ जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है मिससेजनेशन, मिससेजनेशन का मीनिंग यही है कि जब दो अलग रेसेस, ओके, दो अलग रेसेस के बीच में, दो अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में मैरिज होती है या कोहैबिटेशन होता है, उसे मिससेजनेशन बोला जाता है. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 65. नाउ नेक्स्ट इज अगेन वी हैव अ क्वेश्चन जिसमें हमसे मीनिंग पूछा जा रहा है. ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन इज the author has included photographs in the book to lend verisimilitude to the story. Okay, verisimilitude to the story. Now what is the meaning of verisimilitude? Okay, now here verisimilitude means that it makes thing feel real.
अगर आप एक बुक में फोटोज देख रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है कि आप उस चीज को इमेजिन कर सकें, आप उस चीज को रिलेट कर सकें। सो यहाँ पर रियलिटी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिट। अगर आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता है तो कॉमन सेंस को यूज करके भी हम ऑप्शन कभी कभी टिक कर सकते हैं। ओके, टू लेंड रियलिटी। वैरायटी हो गया कि अलग अलग पर्सपेक्टिव, ब्यूटी could be one way, similarity is not fitting, so reality is the right answer. Okay, and this word also mean that if we want to give a real effect, this is what the meaning of this word is. Okay, now I find his sense of humor rather puerile. Okay, the next word we have here is puerile. Puerile का meaning होता है something which is childish, silly. Okay, now यहाँ पर हमारे B option में we have word silly here. Okay, so silly is the right answer. Puerile का meaning होता है childish, बचकाना, silly. That is puerile. Further, sadly, there's always at least one person in the group who dash the group's progress more than helps it. Okay, हमारे ग्रुप में जनरली ऐसे लोग होते हैं जो ग्रुप की प्रोग्रेस को रोकते हैं rather than उसे बढ़ाने के अलावा. Okay, so who impedes? एक पर्सन जरूर होता है जो रोकता है. सिंगुलर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो वर्ब प्लस एस, इसलिए impedes इज द राइट आंसर. impede का मतलब होता है रोकना. ओके, नाउ नेक्स्ट वी गो to question number 70. Okay, by then the house and its occupant have been through many vicissitudes. Okay, but what is the meaning of this sentence? Okay, by then the house and its occupants have been through many vicissitudes. All right, now यहाँ पर vicissitude का मतलब है कि बहुत सारे बदलाव आ जाना, बहुत सारे ऊपर नीचे चीजें हो जाना जो आपने इमेजिन भी ना की हो. ठीक है, so this is what vicissitudes means. Okay, which is not likable, which you do not like also, so this is vicissitude. Okay, अब यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है कि the house and its occupant have not changed at all. ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि बदलाव आ जाना, ऐसे बदलाव आना जो कि प्लीजेंट ना हो. ठीक है, house and its occupants have fallen apart is also wrong. Remained free from attack is not right, क्योंकि problems आ रही हैं. So B is the most correct option here. Okay, now we go to question number 71. We are going to choose the correct form. अब correct form के लिए sometimes when you are left with very less time to solve the question, correct sequence वाले question में, rather than making sentence from the question, try going from option to the question. Okay, so first option we have is RSQP. Though some do get more than their share of disappointments, I believe we have the inner strength to deal with whatever life doles out. This is good. Okay, Q, I believe we have the inner strength, though some do get more than their share of disappointments to deal whatever life doles out. This is making no sense. Again, I believe we have the inner strength, then their share of disappointment. No sense. Okay, PRQS, to deal with whatever life doles out, though some do get more. Again, it is making no sense. So A is making most of the sense. A is the correct option in 71. Going ahead, we have 3 blanks to fill. The boys looked dash the old kite maker, dash the same indifference as they showed dash to the shoemaker. Okay, लड़कों ने, boys ने ओल्ड काइट मेकर को देखा. लुक्ड के साथ हमेशा एट आता है, तो या तो सी सही है या डी सही है. अब हम नेक्स्ट से पता करेंगे कि क्या सही है. यहाँ पर तो एट ही आएगा. The boys looked at the old kite maker, because C और D में दो ऑप्शन सेम है, वन इज मेकिंग डिफरेंस, तो हम डिफरेंस वाले ऑप्शन से देखेंगे. The boys looked at the old kite maker with the same indifference. सेम इंडिफरेंस के साथ देखा, तो विद वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 73. यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. ठीक है, हमें ये बताना है कि अंडरलाइन वर्ड्स, इस वर्ड्स और फ्रेजेस में अंडरलाइन वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना है. ओके,
यहाँ पर probably यही word, यही phrase underline होगा, okay, because others the options are reflecting the same. Okay, he enjoys telling stories to children. उसे बच्चों को कहानियां सुनाना पसंद है. So A is the right answer. Question number 74. I have something to show you, I said to her. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें करेक्ट करना है. इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा वो हमें बताना है. ठीक है. I told her that I had something to show her. This is right. I told her I have something to show her. Have had में convert हो जाता है तो ये गलत है. I said नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर said to है. हमेशा याद रखिए said to हमेशा told में convert हो जाता है. Okay. And these three are wrong क्योंकि have हमेशा had में convert होगा indirect में. तो ये तीनों automatically have की वजह से ही गलत हो गए. ठीक है. 75. एरर करेक्शन. हम एरर बताना है हमें कि इसमें किसमें सबसे ज्यादा एरर है. कमला स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर फ्री टाइम वॉचिंग द टेलीविजन. ओके, कमला स्पेंड्स most of her free time watching the television. Watching television होगा, watching the television नहीं होता है. I like watching the television is not a good sentence. I like watching television is a good sentence. Okay, so यहाँ पर the नहीं आएगा, inappropriate use of article है. So the right answer is D because the is wrongfully placed here. Okay, now these were the 25 questions from AMU 2025 MBA exam. I hope you have solved it. If not, you can go through this video. We also have these ebooks for your preparation. You can target for the next attempt or for this attempt. You can purchase this PDF. It has 2500 practice questions from all the areas where questions are asked: quantitative aptitude, logical reasoning, data interpretation, language, Hindi or English, and general awareness. Subsequently, we have also launched the best test series for AMU MBA exams. We have got a lot of selections. There are 75 tests with 5 full length tests, 50 sectional tests. We still have time. If you want to go through rigorous mock exercise, you can always purchase them and solve these questions, right? So for any further information on the complete course package, on full length test, on until when this course will be applicable, some notes if you are preparing for the next year, if there is any batch going on, recorded classes happening, you can always contact at the given number here. And you can also go and see the website abhiconcept.com for more information. We want to make educational content affordable for you, and so here we are giving our best to you. And if you want to join, the number is available, the website is available. You can always ping us. Thank you for watching. Have a great day. I wish you very all the best for your upcoming MBA exam. Good luck, everyone. Keep working hard. Have a great day. We're going to discuss the English portion. Okay, so the English portion of 2024 exam. Now in this whole video, we will be discussing the 4 papers: 2021, 22, 23, and 24. So we are starting from 2024's paper. In this paper, the question for English language, right? They start just yes, they start question number 51 onwards. Okay, now let's go into it. Question number 51. We start with question number 51. Question number 51 says, select the appropriate option which best expresses the idiom spill the beans. Spill the beans basically means जब भी हम कहते हैं कि अरे तो चलो आओ बताओ क्या बात हुई, let's spill the beans, बातें बताना, description देना, right? तो इन क्वेश्चन नंबर 51 स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि कोई राज छुपे हुए बता देना. ठीक है. राधा केम एंड स्पिल्ड द बीन्स अबाउट श्याम. ओके, सो स्पिल द बीन्स का मतलब है किसी के बारे में कोई सीक्रेट रिवील करना. गॉट इट. नाउ लेट्स गो डाउन. Let's go to the next question. Question number 52. Okay, 52 is, this is again idiom in the nature. Okay, this is again the question on idiom. And the question number 52. Okay, so question number 52 is
Question number 52 is, just give me a moment, I'll adjust the screen. He is learning his own language from scratch. ये भी एक इडियम है। जब हम कहते हैं कि अपना काम स्क्रैच से शुरू करो, इसका मतलब है कि एकदम शुरुआत से शुरू करो। ओके, सो इसका राइट आंसर है फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके, डूइंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच मीन्स you are starting something from the beginning. Okay, so the right answer here is option number D. Is it clear? Okay, now let's go ahead. Let's go to question number 53. 53 is, choose the appropriate option that explains the underlying idiom. And the sentence is, he probably thought his job was a piece of cake. Piece of cake का meaning होता है कि बहुत आसान. Okay, it is not very difficult. Okay, now the right answer herein is आंसर नंबर 3। उसको लगा उसकी नौकरी बहुत आसान है, जबकि नौकरी आसान नहीं थी। ओके, he probably thought his job was a piece of cake. So very easy. Piece of cake का meaning होता है very easy. Now we are a lot of idioms are there in 2024 paper. Usually in other set of paper the idioms are hardly 2 or 3 in question, but AMU I am seeing the 4th question also it is idiom. Okay, so we could not make ends meet. Make end meet का मतलब होता है कि आप किसी काम को पूरा कर पाना. Okay, कोई necessity पूरी कर पाना. Okay, so Ram and Sham were so poor that they could not make ends meet. Okay, so the right answer here is pay for necessities. Okay, 2 जून की रोटी कमा पाना जो है कि हम 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पाए, उस तरह से we could not make ends meet is used in the similar way. Okay, they were not able to make ends meet means कि आप अपनी जरूरत के लिए भी पे नहीं कर पा रहे हो, आप गुजारा नहीं चला पा रहे हो. Okay, now another one is the expression of the cuff. Of the cuff stands for, the right answer is without preparation. Now again this is in the nature of an idiom only. And of the cuff, the expression of the cuff means that you have not come without preparation. Okay, this is option number A, question number 55. Filling the blanks with the, now we have almost done 5 questions. 5 out of 25 questions are your idioms. Now question number 56. We worked dash 3 hours. हमने 3 घंटों के लिए काम किया. ओके, सो वी वर्कड फॉर 3 hours. जब भी हम टाइम की बात करते हैं, फॉर या सिंस में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होगा कि कौन से 3 घंटे, आज के 3 घंटे, कल के 3 घंटे, सुबह के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे, हमें नहीं पता, वहां पर हमेशा फॉर यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 57, आई जस्ट स्क्रॉल डाउन. Yes, question number 57 is, we came, now this 56, 57, we came by car. Okay, हम किससे आए, हम कार से आए. So 56, 57 or even I am finding 58, these are the questions from prepositions. Okay, when we were doing prepositions in the class, I have told you कि कहाँ पर by use होगा, कहाँ पर क्या use होगा. ठीक है, we came बाय कार, हम कार से आए. ही केम बाय ट्रेन, विद नहीं आएगा, इन नहीं आएगा. किस मीडियम से आ रहे हो, जब भी आपको मोड ऑफ ट्रेवल बताना होता है आप बाय यूज करते हैं. वी केम बाय रोड, वी केम बाय कार, वी केम बाय ट्रेन, आई केम बाय प्लेन. We use terms like these. Okay, so we discussed question number 57. 58 is, the cat jumped dash the chair. Okay, बिल्ली जो है कुर्सी पे कूद गई, यानी कि ये कुर्सी है, देयर इज दिस कैट, ये यहाँ पे कूद के बैठ गई. ओके, द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर. ऑन टू विल बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट question number 59. We will play tennis tomorrow. We will play tennis tomorrow depending on the rain. हम कल टेनिस खेलेंगे, but it depends कि बारिश हुई या नहीं. तो depending on the rain.
ओइंग टू का मतलब है कि बारिश की वजह से टेनिस खेलेंगे, वो गलत हो जाएगा। थ्रू द रेन का मतलब है बारिश में भी खेलेंगे। अकॉर्डिंग टू द रेन नहीं आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग हम तब यूज करते हैं जब हम किसी सोर्स की बात कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेन, अगर वेदर होता अकॉर्डिंग टू द वेदर हम यूज कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू द रेन विल नॉट बी अ मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रेन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन नंबर 60। इट फेल डैश द टेबल एंड ब्रोक, वो टेबल से गिर गया और टूट गया। ठीक है, आंसर होगा ऑफ। इट फेल ऑफ द टेबल एंड ब्रोक, ए इज द राइट आंसर। Preposition से भी we have done almost 5 questions. So I am finding that preposition and your idioms, they are very important. Now question number 62 is about articles. Articles a and the. We were looking for dash place to spend dash night. Okay. Question number, I'll just scroll the screen a little bit. Question number 61. ओके, वी वर लुकिंग फॉर अ प्लेस, हम एक जगह ढूंढ रहे थे ताकि हम नाइट स्पेंड कर सके। सो वी वर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्पेंड द नाइट। ओके, हम एक जगह ढूंढ रहे थे ताकि हम रात स्पेंड कर सके। क्वेश्चन नंबर 62। यस, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हम ये कौन सी कैटेगरी है, वैसे हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच भी बोलते हैं ग्रामेटिकल कैटेगरी की जगह। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम है कि ये कौन सा टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, क्या एडजेक्टिव है, प्रिपोजिशन है, एडवर्ब है, गेरेंड है। ट्रेन कैसे जा रही थी, धीरे जा रही थी। स्लोली किसको बता रहा है, जाने को। जब भी कोई वर्ड क्वालिटी बताता है किसी वर्ब की, कि वर्ब कैसे हो रहा है, ट्रेन जा रही है धीमे, यानी कि स्पीड की बात हो रही है, तो वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 63। 63, choose the odd one out, a loaf of bread, a piece of bread, a bar of bread, a slice of bread। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना लोफ की, इसमें डिफरेंस क्या है। यस, लोफ, ब्रेड का लोफ हो सकता है, ब्रेड का पीस भी हो सकता है, स्लाइस भी हो सकता है, ब्रेड का बार नहीं हो सकता। जब ब्रेड पूरी होती है, जब हम उसे बिना कट किए यूज करते हैं, पूरी जो ब्रेड है उसको हम लोफ कहते हैं। उसके बाद जब लोफ कट होती है, वो स्लाइस भी कह सकते हैं, पीस ऑफ ब्रेड भी कह सकते हैं, बट बार ऑफ ब्रेड कुछ नहीं होता। सो बार ऑफ ब्रेड इज द ऑड वन आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 64। इनडायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट क्या है, डोंट शाउट आई सेड टू जिम, आई सेड टू जिम डोंट शाउट, आई टोल्ड जिम नॉट टू शाउट। ओके, हम इसमें ये जब हम बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, हम ये वाली बॉडी चेंज नहीं करते हैं। तो आई सेड टू बस मेयरली आई टोल्ड जिम हो जाता है, एंड आई टोल्ड जिम नॉट टू शाउट। yes, B becomes the right answer here, 64, option number B। बिकॉज इन सब में क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट, सब्जेक्ट वाला पार्ट चेंज हो रहा है। हमें स्पीच चेंज करनी होती है, हमें इस पार्ट को चेंज नहीं करना होता। इसके वर्ब हम चेंज नहीं कर सकते। मेयरली सेड टू को हम टोल्ड कर सकते हैं, हम उसे हैव हैड नहीं कर सकते। ओके, दैट इज व्हाई बी इज करेक्ट। Question number 65. Fill in the blanks with the most appropriate option. The judge gave a clear and dash summing up of the case. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लियर और एकदम क्लियर, कि जज ने बिल्कुल क्लियरली जो है बिल्कुल सही से समझाया। द राइट आंसर हियर विल बी परपिशियस। ओके, दिस विल बी राइट आंसर, परपिशियस। इट इज सिनोनिम टू क्लियर, कि बहुत क्लियरली और अच्छे से सम अप किया गया केस। क्वेश्चन नंबर 66।
Fill in the blanks with the most appropriate option. The bomb was dashed by an Indian army. Diffused, 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 diffused. Okay, so basically they are testing your spelling here. Okay, so 66 में आंसर है डिफ्यूज करना. Okay, जो हम फ्यूज लगाते हैं और डिफ्यूज करना यानी कि कनेक्शन कट कर देना, फ्यूज कट कर देना, उसको हम डिफ्यूज बोलते हैं. डिफ्यूजन वाला डिफ्यूज ये नहीं होता है. ठीक है, ये DEFUSE वाला डिफ्यूज होता है. ऑल राइट, ओके. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 67. चूज द करेक्ट ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्ट्रक्चर. जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इनकरेक्ट हो. द फ्रेंच हैव पायोनियर्ड दिस अप्रोच. शी इज अफ्रेड फॉर द वुल्फ बिग एंड बैड. It was a very eloquent and witty speech. The wounded have now been evacuated. This is correct. This is correct. She is afraid of the wolf होगा. किसी से डरने का मतलब afraid of होता है, for नहीं होता. So this is the incorrect option and therefore the right answer. क्योंकि हमें incorrect structure को tick करना है. Okay. Coming to question number 68. 67 का आंसर B है. Coming to question number 68. Question number 68 is, it began to get cold and he dash not wearing his coat and he regretted not wearing his coat. Okay, ठंड होनी शुरू हो गई और उसको रिग्रेट हुआ कि उसने कोट नहीं पहना है. So regretted is the right answer. He regretted wearing his coat. Which of the following is not an example of word formation called blending? Okay, question number 69. Which of the following is not an example of word formation process called blending? Now blending से words बनते हैं. Okay, जो ऑटोमेट है, ऑटोमेट अपने आप में एक पूरा वर्ड है. ओके, ब्लेंडिंग में क्या होता है कि आप दो वर्ड्स को ब्लेंड करके एक नया वर्ड बना देते हो. ठीक है, जैसे कि मान लो आपने होटल के लिए एक नया वर्ड बना दिया, मोटेल. ओके, आप इनको कंबाइन करते हैं और वर्ड्स बना देते हैं. तो ऑटोमेट जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द वर्ड ब्लेंडिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, yes, we come to the next one. Question number 70. Which one of the following is incorrect? Okay, the weather will be dry and windy tomorrow. The weather will be dry nor windy tomorrow. Okay, the weather will be dry or windy tomorrow. The weather will be dry but windy tomorrow. Now here in this question इनकरेक्ट पूछा है. विल बी ड्राई नॉर विंडी जो है ऑप्शन नहीं होगा. या तो विल बी के साथ और आएगा या फिर नीदर विल बी नॉर आएगा. नॉर नीदर या नॉट के साथ ही आता है, बिना नीदर और नॉर के नॉट नहीं आता. So this question gets incorrected and therefore it is the right option. Question number 71. He waited an hour before anybody came. Okay, किसी के भी आने से पहले उसने इंतजार किया. Now what kind of pronoun is anybody? हम जब पढ़ रहे थे pronouns, we have had a discussion of कि ये किस तरह के pronoun है. Demonstrative नहीं है क्योंकि demonstration नहीं है. Interrogative नहीं है क्योंकि सवाल नहीं है. Definite नहीं है क्योंकि किसी anybody कौन आ रहा है हमें नहीं पता. Okay, so indefinite is the right answer in this question. B is the right answer. Anybody है, we don't know who. कौन है हमें नहीं पता. Indefinite pronoun is the right answer. Then next we go to question number 72. Question number 72 is, he is dash with Parkinson's disease. Okay, so the right answer for question number 72 will be, he is afflicted with the Parkinson's disease. Okay, afflicted का मतलब होता है पीड़ित होना, ग्रस्त होना, बीमार होना. ओके, सिक होना. एग्रावेट का मतलब बढ़ जाना. एडवर्स का मतलब उल्टा पड़ जाना. इन्फ्लिक्ट का मतलब कि कोई आपको बाहर से आके इंजरी दे रहा है. एफ्लिक्ट का मतलब ही इज सिक विद पार्किंसन डिसीज. सो एफ्लिक्टेड इज द राइट आंसर. Question number 73. Choose the incorrect pair of singular plural. Okay, now here what
दिस इज अ गुड क्वेश्चन. नाउ स्टिमुली इज आपके आसपास का सराउंडिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 73 में स्टिमुली स्टिमुलस स्टिमुली इज राइट, लार्वा लार्वे इज राइट, बेसिलस बेसिलियम इज नॉट राइट, ऑटोमेटॉन ऑटोमेटा इज राइट. ओके, इट विल ईदर बी बेसिलिया. ओके, प्लूरल में ये बेसिलिया हो जाएगा, बेसिलियम नहीं होगा. ऑलराइट, बिकॉज यूजुअली जब ऐसे वर्ड्स को हम प्लूरल में करते हैं बेसिली, तो उस केस में एंडिंग जो है वो किसी ना किसी वोवल से होती है, कॉन्सोनेंट से नहीं होती. सो सी विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 74. Question number 74 is choose the incorrect. Now you need to be very careful that question is demanding you to choose incorrect option, not the correct option. Most of the candidates, most of the students make mistake while selecting what is incorrect. They often select correct and think that their question is right, but this is not right. Okay, so all the good work is ruined. Either bus go into town, neither answer is right, have you enough food. Okay, so question number 74, B, either bus go into town. This is the incorrect form of the following. Okay, because all of them are making sense. Either bus go into town का यहाँ पर आना चाहिए, every bus go into town, या all the buses go into town, not either bus go into town. Okay, that is why 74th का answer is B. Question number 75, last question from English in your AMU 2024 question paper, which of the following is an example of relative clause? Okay, relative clause क्या होता है? That आप उसमें कोई रिलेशन बता रहे हो. द कार, जो हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ा था, वो गाड़ी जो मैं लाया, वो लड़की जो डांस करती है, वो लड़की जो क्लास में टॉप करती है. सो यहाँ पे विच आता है. द कार विच आई ब्रॉट वाज अ मिनी. सी इज द राइट आंसर. ओके, सो दिस वाज योर AMU 2024 paper. Thank you for watching it till here. We will just resume the next paper in a little while. All right. All right, so let's get started with AMU 2023 question paper. In the AMU 2024 question paper, we have seen that there were questions from idioms, 5 questions from idioms, there were questions from pronouns, there were questions in error correction, direct, indirect. So it is a mix of everything that we have discussed so far. Okay, now in this paper, we are going to look at the English portion. Now the English portion in this paper is starting at, this is 2023 Aligarh Muslim University MBA paper, and here in the question is starting from question number 1. Okay, now question number 1, 2, 3, 4 and question number 1 to 4. I'll just see. Okay, yes. Question number 1 to 5 are from the passage. We will come to it in the later while of this video. We will start with the question number 6. Okay, we will do grammar questions first and then we will come back to the passage. All right, so question number 6 in the AMU paper 2023 for MBA exam is the antonym of genome. Antonym of genome is, now we know antonym is opposite. Okay, and antonym of the term genome. So when we do, I have often told it to you in classes कि जब भी हम synonym antonym करते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ये words भी दिमाग में रखने हैं. Now what does the term genome means? Genome का मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटी, very small, tiny. So हमें बताना है antonym of genome. So genome is something which is very tiny, which is very small or dwarf. अब इसका opposite क्या होगा? Which is very big, giant. So antonym of genome is giant. Now question number 7. Sania Mirza's track record in tennis is dash among Indians. Okay, कि सानिया मिर्जा का जो इंडिया में टेनिस का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ऐसा है कि किसी और ने नहीं बनाया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अनप्रेसिडेंटेड, दैट शी इज द फर्स्ट वन डूइंग इट एंड इट हैज नॉट बीन डन बाय एनीबॉडी बिफोर. ओके, सो अनप्रेसिडेंटेड इज द राइट आंसर. Question number 8. Choose the correct option to fill in the blank. You dash for me. I could have found the way. All right. Okay. तुम्हें मेरा वेट कर लेना चाहिए था.
मैं रास्ता ढूंढ लेता। तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं थी, मैं रास्ता ढूंढ लेता। तो तुम्हें जरूरत नहीं थी, आई वुड हैव कम। सो नीड नॉट हैव वेटेड। हमने जब मॉडल्स पढ़े थे तो हमने कहा था जहां पे जरूरत की बात हो वहां पर नीड आएगा। यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, आई कुड हैव फाइंड द वे। तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं थी। ओके। Question number 9. Choose the correct option to fill in the blanks. You have been traveling all day. You dash be very tired. You must be very tired. तुम जरूर थक गए होगे. Must be very tired. Okay. Very simple. Question number 10. Again we have the term antonym. Antonym of the term polemic. Okay. So now when you solve this question, you also need to keep in mind what polemic means. Okay. So polemic is basically a critical expression or a critical attack, that you are, criticizing someone. You are talking in the terms of criticism of someone. Okay. So question number 10 is asking you, antonym of polemic is criticizing or not agreeing. Okay, you don't agree with, because when you criticize, you don't agree with someone. So agreement hoga antonym. Okay, that you are not agreeing. So antonym will be the term agreement. Okay. Question number 11. The antonym of malevolent. Malevolent होता है कि कोई पर्सन जिसका इंटेंशन अच्छा ना हो। ये ऐसा सवाल है जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। एंड मेलेवलेंट का डायरेक्टली एंटोनिम होता है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट होता है somebody who is very kind hearted. सो यहाँ पर 11th का आंसर है फर्स्ट ए, काइंड। ओके। मेलेवलेंट का अगर ऑप्शन में बेनेवलेंट आएगा तो आप उसे टिक कर देंगे, और अगर अगर नहीं है तो काइंड होगा, आप काइंड टिक कर सकते हैं। दिस इज एंटोनिम। टू रेज एन एम्बार्गो। टू रेज एन एम्बार्गो इज क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is asking you, what is the meaning of to raise an embargo? Okay. बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगेन हमारे पास ईडियम आ रहा है। ओके। सो एम्बार्गो का मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगाना। ओके। एम्बार्गो मीन्स टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज पे रोक लगाना। जब हम बात करते हैं टू रेज एन एम्बार्गो की, ओके, इट मीन्स दैट यू आर रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग। ओके। आप किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या रोक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर रोक लगाने का सबसे नियरेस्ट जो वर्ड है वो है टू रिमूव इट। अगर ऑप्शन में आएगा टू रिस्ट्रिक्ट या टू लिमिट तो आप इस पे टिक करेंगे, बट बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑप्शन, टू रिमूव इज द नियरेस्ट ऑप्शन, दैट इज वाई you will take this question. You will take to remove it in question number 12. Now next is Hobson's choice. Again we have an idiom coming at question number 13. Hobson's choice means that you can see that there are a lot of choices. आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, बट जब आप एक्चुअली में करने जाओगे तो आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कि सीमिंगली बहुत सारी चॉइस हो सकती है बट एक्चुअली चॉइस ही नहीं है, जो अवेलेबल है आपको वही करना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. नाउ व्हेन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज you have to you have to identify the error. The money lender handed over 100 rupees note to the borrower. Okay. Now in this question, which part has the error? 100 rupee note to the borrower. 100 rupees नहीं होता, 100 rupee note होता है। ठीक है। तो C is the right answer. C में error है। All right. Now next question is question number 15. Choose the correct option to fill in the blank. The reward was not commensurate dash the work done by us. जो reward मिला, that was not in commensuration with the work done by us. So commensuration के साथ आता है with. It did not commensurate with the work done by us. कि जो हमें इनाम मिला वो काफी नहीं था हमें compensate करने के लिए. We could have got more. Again question number 16. Identify the part that has an error. I will give you a ring when I will reach London. Okay, so in question number 16, the error lies in part when I reach. जब मैं लंदन आऊंगा मैं तुम्हें अंगूठी दूंगा. I will give you a ring when I reach London. लंदन आकर मैं तुम्हें अंगूठी दूंगा. So यहाँ पर present tense आएगा, future नहीं आएगा. Okay, so C is the right answer where there is an error.
Now question number 17. The word conspicuous means dash. In it was a conspicuous landmark from the sea. जब हम synonym antonyms कर रहे थे, we have discussed the term conspicuous either in paragraph or somewhere. Conspicuous का मतलब होता है clear, एक clear indication मिलना. Okay, so conspicuous landmark from the sea means there was a clear landmark from the sea. Question number 18. The word tacit. The word tacit herein means something which is unspoken. कोई चीज जो unspoken है but वो rule है. For example, sun rises from the east. ये कोई फैक्ट प्रूव होने का नहीं है, ये टैसिट फैक्ट है. ओके, दिस इज टैसिट कि इसको बोलने की जरूरत नहीं है, सन ईस्ट से ही राइज करता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपिक्यूरियन? एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन होता है कि यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एवरीवेयर. ओके, एपिक्यूरिया बेसिकली मीनिंग है एपिक्यूरिया का कि you are giving pleasure everywhere, you are minimizing pain. तो एपिक्यूरियन का जो सिनोनिम है वो है हेडोनिस्टिक. हेडोनिज्म और एपिक्यूरिया दोनों ही, हेडोनिज्म और एपिक्यूरिया दोनों ही पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं जो कि हैप्पीनेस स्प्रेड करने की बात करती हैं. सो सिनोनिम ऑफ एपिक्यूरिया इज हेडोनिज्म और हेडोनिस्टिक. एपिक्यूरियन का हेडोनिस्टिक. ओके, क्वेश्चन नंबर 20. अ पेपर रिटन इन वंस ओन हैंडराइटिंग, that is manuscript. हाथ से लिखी गई चीज manuscript. Very simple, very easy level question. A person who is reserved in talks. Question number 21. जो ज्यादा बात नहीं करता उसको बोलते हैं reticent. Okay, next is to cool one's heels. Idiom again. Question number 22. Pick out the meaning of the given idiom. Question number 22. To cool one's heel. किसी के लिए इंतजार करने को to cool one's heel बोला जाता है. Okay, so you can directly memorize it. The meaning of to cool one's heels means to be in waiting for someone. Question number 23. Give the antonym of the term schism. Okay, schism क्या होता है? When we were talking about schism is also a word we have discussed. Now schism is basically there is a division. जैसे हम कहते हैं ना गरीब अमीर के बीच की खाई, उसे हम schism कहते हैं. So हम एक division की बात कर रहे हैं, हमें बताना है antonym. Okay, so question number 23 में unification बात करता है एकता की. ड्रिफ्ट क्या है? दरार आ जाना. सेपरेशन क्या है? अलग हो जाना. एलियनेशन क्या है? किसी को अलग कर देना. यूनिफिकेशन क्या है? किसी को साथ लेकर आना. So unification is the antonym of schism. Okay, question number 24. Synonym of the term uncouth. Okay, uncouth का मतलब होता है somebody who is not very well mannered, somebody who is lacking manners. And the answer to question number 24, where the synonym is answered, where we are asking for the term uncouth, they are asking synonym. Yes, so uncouth is somebody who does not have manners. Then unpolished will be the right answer. Okay, who is not having manners. Renounced नहीं होगा, classy नहीं होगा, well bred नहीं होगा. Because well bred means somebody who shows good manners. Okay, यहाँ पे हमें synonym पूछा है, synonym जो है वो unpolished होगा. Okay, in question number 24. Yes, unpolished. Question number 25 is give the antonym of frugality. Okay, so frugality, when we were discussing, we have, I can recall that frugal is one word we have discussed. Okay, frugal कौन होता है? फ्रूजैलिटी का ट्रेट क्या है कि जो पर्सन बहुत सोच समझ के इकोनॉमिकली अपना पैसा खर्च करता हो. ओके, सो कोई अगर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है तो उसे हम एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं. तो फ्रूजैलिटी का एंटोनिम है एक्स्ट्रावेगेंट. ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर अप टिल 25. नाउ वी कम बैक टू द पैसेज. Now solving the question for passage. This passage I have told you multiple times that the passage has to be done in when you are attempting the passage in the competitive exam. Just first go through the questions and then come back to the passage again. So what does the word clamoring? We need to find the word clamoring. According to the passage, the group of people advocating Brexit are referred to as dash. According to passage, UK's leaving of the European Union is famous called dash.
This is a passage I think we have also discussed when we were doing passage discussion in our class. Okay, now this is basically क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है, you can read the passage and you can match the answers from here. What does the word clamoring refers to? Clamoring refers to strong demand. Okay, according to the passage, the group of people advocating Brexit are referred to as लीव कैंपेन, बिकॉज ब्रेक्सिट क्या है, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, उसको हम यहाँ पे ब्रेक्सिट कह रहे हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 3 here. Okay, so 3 का आंसर भी B है. And when we come to question number 4, according to the passage, the political party in UK is criticized for half-hearted campaign to remain in the EU. Okay, so political party जो the political party in the UK criticized for half-hearted campaign to remain in EU, हमें वो political party बतानी है, which is the Labour party जो थी, that is criticized for half-hearted campaign to remain in EU. Okay, question number 5 is, what is the meaning of the word podcast? So podcast basically means that an audio file which is uploaded on the internet and you listen to it. आजकल तो a lot of people like us, we do listen to podcasts, right? So this is your paper AMU MBA paper of 2023. Thank you for staying in. We will be doing in the next segment, in this upcoming segment of this video, we are going to discuss paper of 2022 and 2021, right? So we'll just start discussing them. Okay, so now we are starting the paper on 2022 MBA entrance exam as conducted by the Aligarh Muslim University. In this paper, the questions for English portion starts question number 51 onwards. However, we will be dealing with grammatical questions first and then we will be coming back to the passage. Okay, so we start with question number 52. 52 says some famous writers' skills have lain dash until quite late in life. Lane का मतलब होता है to lie down. Okay, stagnant हो जाना, रुक जाना. Okay, तो this is matching with the word dormant, कि वो ढल गई है, खत्म हो गई है, एकदम dormant हो गई है. Okay, so answer is D. Okay, going with the question number 57, because in the 56th question, the word contentious, dogmatic and eclectic does not fit in the circumstance given here. Contentious का मतलब होता है contention raise कर रहा हो, argumentative हो कोई writer, उसको हम contentious कहते हैं. जब हम dogma की बात करते हैं, dogmatic का मतलब है कि बिल्कुल स्थिरता से किसी बात को बोलना. ओके, बिल्कुल absolutely truth बोलना. And when we talk about something which is eclectic means ये बहुत सारी रेंज से आइडियाज लेकर आना. तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों वर्ड्स जो हैं, ये एक्टिव राइटिंग स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम लेन की बात कर रहे हैं कि वो ठहर गई है, सहम गई है. सो डोरमेंट विल बी द राइट आंसर. ओके, now when we go to question number 57, the next question, it is fill in the blanks again with the most appropriate option. The director dash me for neglecting my duty. Okay, director ने मुझे रिप्रीमांड किया. ओके, आंसर विल बी रिप्रीमांड. मुझे झाड़ लगाई, डांट मारी. ओके, रिप्रीमांड इज कि जैसे हम डांट डपट देते हैं ना, ऐसे एकदम से थ्रैश कर देते हैं वर्बली, उसको हम रिप्रीमांड कहते हैं. अटैक नहीं होगा, हार्श नहीं होगा, एनरेज नहीं होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन पीपल आर फ्रूजल. फ्रूजल का हमने 2024 के पेपर में भी मीनिंग देखा था. फ्रूजल का मतलब है somebody who spends economically थ्रिफ्ट मैनर में. ओके, जो किफायत करता हो, बचत करता हो, थ्रिफ्टी हो. ठीक है, अगर कोई चीज 500 की मिल रही है और दूसरी जगह पे 300 की मिल रही है तो मैं 300 की खरीदूंगी. ओके, सो व्हेन पीपल आर फ्रूगल दे स्पेंड स्पैरिंगली, वो कम खर्च करते हैं. स्पैरिंगली का मतलब होता है कम खर्च करना. एक्स्ट्रावेजेंटली मतलब बहुत खर्च करना, बिना ध्यान दिए खर्च करना, इम्पल्स पे खर्च कर देना. बट व्हेन पीपल आर फ्रूजल दे स्पेंड स्पैरिंगली.
A is the right answer for 58th. Question number 59. Ravi had not expected to meet his friend. It was quite an auspicious meeting, accidental meeting, undesirable meeting, intentional meeting. It was अचानक मिल गया, so it was quite an accidental meeting. Auspicious होता है शुभ. हम कहते हैं ना, on the auspicious occasion of my wedding, please come. Undesirable कि मिलना ही नहीं चाह रहा. अगर intentional होता तो expected कैसे expected नहीं होता, right? So that is why it is accidental is the most accurate answer. Now the synonym of annihilate is what? So annihilate का meaning अगर आपको नहीं भी पता हो तो annihilation of caste. It is a write up by Dr. B.R. Ambedkar. बाबा साहेब अम्बेडकर का एक राइटअप है, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट. एनहिलेशन क्या होता है? किसी चीज को एकदम खत्म कर देना, एकदम उसका नामो निशान मिटा देना. ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ annihilate. Okay, synonym ढूंढना है. So something to put out of existence. किसी का अस्तित्व मिटा देने को कहते हैं annihilation. So 60 का right answer है put out of existence. अस्तित्व मिटा देना, destroy कर देना. ठीक है. Question number 61. A child in the first grade tends to be dash all of the other children in the class. Okay. Child in the first class tends to be the same age the same age as all of the other children in the class. First class के बच्चे की उम्र same age की होगी बाकी सबसे. ठीक है ना? देखो जहां पर as आता है वो end भी as से होगा. ठीक है? So the same age as all of the children of the class is the right answer. Now next is question number 62. The Supreme Court does not hear a case unless dash except those involving foreign ambassadors. The Supreme Court does not hear a case. It has already been tried. Unless it has already been tried, except those involving foreign ambassador. Now this question is a little bit of GK question as well. So Supreme Court वो वही केस सुन सकता है जो ऑलरेडी ट्राइड हो, जो ऑलरेडी जो है किसी ने ट्राई किया हो हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, एंड देन वो सुप्रीम कोर्ट के पास आया हो. ठीक है? इन अपील और इन सम पेटिशन, इट हैज ऑलरेडी बीन ट्राइड. ओके, सो डी इज द राइट आंसर. Yes, 61, 62, both are D. Moving on to question number 63. 63 is error correction. Despite of the pills which are available, many people still have trouble while sleeping. Okay, despite the pills, despite of nahi, despite the pills which are available. Despite of nahi hota, in spite of hota hai. ठीक है? So despite the pills which are available, many people still have trouble while sleeping. First is the correct answer. The error lies in the first part. Okay, next, again error. The duties of the secretary are to take the minutes, mailing the correspondence, and calling the members before meetings. In question number 64, the right answer is to note the minutes. The duties of the secretary are to take the minutes. To note the minutes will be the right answer. Okay. Pardon me, mailing हम यहाँ पर उसमें लिख रहे हैं आर है ना, सॉरी माय मिस्टेक. द ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी आर टेकिंग द मिनट्स होगा, क्योंकि हम आर के साथ प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा रहे हैं तो यहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा. टेक इज द करेक्ट फॉर्म. वी विल टेक टेकिंग द मिनट्स, मेलिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कॉलिंग द मेंबर्स बिफोर मीटिंग. सो सेकंड में एरर है, टू टेक की जगह टेकिंग आएगा. नेक्स्ट इज question number 65. Choose the correct order of the sentence, mark A, B, C, D, E, and make the logical paragraph. So now when we were doing jumbled sentences, I told you that you need to find that one sentence which introduces the whole content. Okay, so the newspaper man, the flower seller, milkman, we were there all privy to chatting and sharing of news. Elderly find comforting when we remove them from their homes. It is not only the family.
They see everyday joys and both become their own. In our system of living, the elderly at home have a circle of acquaintances. The loneliness of the discarded elderly is manifold. When we forcibly remove people from surrounding they have been part of for decades, we put an unmendable tear in the fabric of their life. So basically, this paragraph is about the loneliness of elder people. Okay, so D will be my first opening sentence because the paragraph is talking about the paragraph is basically talking about how elderly people feel lonely quite often. So D से हमारे जो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं वो A है और वो D है. Now D में इसके बाद E आ रहा है और इसके बाद D आ रहा है, ऑप्शन D. हमें अभी B और E पढ़ के सेलेक्ट हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा है. So when we forcibly remove people from surrounding they have been part of for decades, we put an unamendable tear in the fabric of their lives. When we remove them from their homes, it is not only the family that they are being removed from, but all those people that they see every day and those whose joys, vows become their own. We go to the next sentence, C in it, okay? In our system of living, the elderly at home have a circle of acquaintances. The newspaper man so-and-so, they find comforting. When we remove them, so this is making more sense. If you read, now if you arrange DECAB and DBAEC, you will find A is making more sense than DBAEC, because when we go from D, we go to B, and if we go to A, and then we come out of C of E, it is not making a lot of sense, okay? Because यहाँ पर पहले acquaintance की बात हुई है और फिर यहाँ पे acquaintance दिखाए गए हैं, तो C के बाद ही A आएगा. अब इनमें जो order है, that is DECAB, okay? So A will be the right option. When we were doing this class on jumbled sentences, we discussed it whenever we are confused between two options, because jumbled up can be from anywhere. So I was confused between these two because B and E were equally making sense. I arranged A and D in option and then made sense out of paragraph, and A seems more accurate to me, so A will be the right answer. You need to make the sense, you need to give connection to the paragraph, okay? Now question number 66. He was so involved in his quest for spiritual enlightenment that he regularly forget more quotidian concerns. Okay, now what is the meaning of the word quotidian? Okay, so this is a good word. quotidian का मतलब होता है ऐसी चीज जो डेली हो रही हो, रूटीन में हो रही हो, यानी कि आम चीज, which is very ordinary. So C is the right answer here. Okay, we need to give the meaning of quotidian. Quotidian means ordinary. Now question number 67. The science fiction novel published in 1955 was strangely dash. It pictures the year 2000 as having no flying cars, but a communication system known as interconnect, used largely for online shopping and wasting time. Okay, now what word we will fit here, because it is talking of it is not showing any flying cars, but a communication system for online shopping and wasting time. Now, we need to go into the meaning of the words given in the paragraph. Okay. प्रोलिक्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत लेंदी हो, जो बल्कि लिखी गई किताब हो, बहुत बड़ी किताब हो, ठीक है. प्रिसिएंट का मतलब होता है, ऑप्शन बी, प्रिसिएंट मीन्स ऐसी चीज जो प्रिडिक्ट कर रही हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. ओके, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज. You must be knowing of one this series called Simpsons is, I think Simpsons is the name. I don't know. I'm not very aware of the TV shows. But Simpsons may this has been said that whatever they were predicting, they have predicted some kind of war to take place in 25 or something, and it is happening. So Simpson is prescient in nature because it predicts the future knowledge. Okay. The next is peripatetic. So peripatetic means that when you are traveling from one place to another and to another. Okay. Then next word, last word is penury. So see, in one question you saw a lot of words. So penury means poverty. When you are penniless, जब आपके पास पैसे ना हो. So इसमें क्या हो रहा है कि एक communication system जो इंटरनेट है, आज के टाइम में वो इंटरनेट है,
1955 में हुई, 2000 साल में इंटरनेट दिखा रहा है कि लोग यूज कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली हैपनिंग टुडे। सो यहाँ पर द मोस्ट फिटिंग वर्ड विल बी प्रिसिएंट, कि उस 1955 में लिखी गई एक नॉवल जो प्रिडिक्ट कर पा रही थी कि 2000 में क्या होगा। सो दैट वाज स्ट्रेंजली प्रिसिएंट। Clear? Let's go to, this was a good question. Anyway, this was a very good question. I like this question a lot. Now, loss of memory is known as amnesia. The right answer is amnesia. Insomnia is lack of sleep. Dyslexia is when you have difficulty in understanding something. ओके, डिसलेक्सिया क्या होता है कि जब आपको आप रीड ना कर पाओ, आप समझ ना पाओ, वर्ड्स को डिकोड ना कर पाओ। जो तारे जमीन मूवी है, तारे जमीन पर, उसमें जो दैट किड ईशान, ही वाज सफरिंग फ्रॉम dyslexia only, okay, when he was unable to codify what has been written. Then there is another word which is somnambulism. Somnambulism का मतलब होता है sleepwalking, okay. So amnesia is the right answer with loss of memory. Now question number 69. Many a girl dash have scored good marks, have been scoring good marks, has scored good marks. Many a girl has scored good marks, क्योंकि हम girl के हिसाब से सेंटेंस जो है कंप्लीट करेंगे. सो सी इज द राइट आंसर. हैज आएगा, सिंगुलर आएगा, इसमें यही सिंगुलर है. ओके, 69 का आंसर है सी. नाउ व्हेन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 70, again you have to fill in with the most appropriate option. Preposition का सवाल है. The old woman I saw last night was blind dash one eye. Okay, was blind in one eye because उनको एक आंख में नहीं दिखता है. She was blind in one eye. C is the right answer. Question number 71. The experiment only looks like a success. Choose the option that gives correct meaning of the sentence. It is not possible to see anything but anything but a success. The experiment seems successful, but we don't know for sure. The experiments only looks like a success. कि सिर्फ दिख रहा है succeed होगा, but फेल हो सकता है. इसका मतलब ये है. So C is the right answer. The experiment has only the appearance of the success, but really is the failure. क्योंकि केवल दिख रहा है सक्सेस होगा, जरूरी नहीं है कि हो, फेलियर है ये एक्चुअल में. This is what the phrase means. Question number 71. Okay. Now when we come to question number 72, fill in the blanks with the most appropriate option. The management is seized dash this problem. Okay, so the management is seized with this problem. Okay, इस सवाल से, इस प्रॉब्लम से मैनेजमेंट जूझ रहा है, जकड़ा गया है इस प्रॉब्लम में, with the problem. The passive voice of are you doing your homework is, are you doing your homework is your, are you doing your work, is your work being done by you. So C will be the right answer. Is your work being done by you is the right answer. 73 ka option number C. Okay, question number 74. In spite of film's many fault on the dash, it is worth seeing. As a whole, on the whole, it is worth seeing. Okay, B is the right answer. Question number 75. Fill in the blanks with the most appropriate option. Mr. Sharma, the critic, was dash enough to praise an author he detested. Okay, वो इतने सुलझे हुए हैं, या वो इतने वो इतने सुलझे हुए हैं, मैग्नेमिनस हैं, दैट उन्होंने उस ऑथर की भी तारीफ की जिनसे उन्हें परेशानी थी या जो उन्हें पसंद नहीं थे. ओके, magnanimous means that you are very generous. Okay, you are very generous and you are very humble. Okay, so when you praise somebody who you don't like, it shows your humbleness. So A is the correct answer. Okay, all right. Now why not humble? Yes, there is another word in this question, humble. Humble क्या होता है? Humble भी एक general term है, लेकिन मैग्नानिमस टर्म हम स्पेशली यूज करते हैं जब हम किसी ऐसे पर्सन को प्रेज कर रहे हो जिससे हमारी कोई राइवलरी हो या जो हमें नापसंद हो. ओके, कि उनका दिल इतना बड़ा है, वो इतने जेनरस हैं कि उन्होंने उसको भी प्रेज कर दिया. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट बैक टू द पैसेज.
Now let's get back to the passage, which is from question number 55 to question number 51 to 55. So the passage is about DNA. Okay. Now the passage is basically talking about DNA. A clone is genetically identical copy of a living organism. Human clones are nothing new. They occur naturally in the recognizable form of identical twins. Not until the successful cloning of a sheep called Dolly, however, has been possibility of intentionally producing an identical copy of human being considered seriously. Okay, so this is basically talking of cloning through DNA uh, in the human eggs and so. Okay, so you can go through the passage. I will be coming just to solve the questions for you so that you can have a solution answer key. Okay, the primary purpose of this passage is to do what? Number one, it is saying to dismiss a new scientific method as unethical, to defend a medical procedure against unwarranted attack, explain a process and its ramification, describe a hypothesis and give its negative consequences. So when you look at the passage, it is telling you nothing but how a DNA is being cloned. Okay, so the tone of the passage is elaborative in nature when it is telling what is the success, what is the purpose of DNA cloning, what are the failures encountered, etc. So C is the right answer here. Now when we go to question number 52. The author of the passage mentions Dolly most probably in order to suggest that human cloning is feasible. क्योंकि हमने paragraph number 1 में ही पढ़ा है कि human cloning जो है that is possible. I will take you to the paragraph. Okay. Now when you look at this first paragraph I was doing with you. Yeah. Okay. Not until the successful cloning of a sheep called Dolly identical copy of human being has been considered seriously. So Dolly का cloning mention किया गया है कि because of this cloning, human body can also be resorted to cloning. Human cloning is feasible. So 52 का answer है A. Okay. Now question number 53. According to the passage, which of the following is a potential obstacle to human cloning? Okay. The answer is predetermination of DNA within the adult body. This is mentioned in your paragraph. You can go back and check the answer. All right. This is there in the paragraph. A clear reading of the paragraph will lead you to this answer. Question number 54. The passage suggests which of the following? What is the inference you can draw out of the passage? Okay, so when you read this passage, the passage is saying that that human cloning number one is possible, but it is not talking about the years when which we will be able to reach human cloning, right? What यहाँ पर आप सिर्फ उसको टिक करेंगे जो पैसेज बता रहा हो. जैसे कि पैसेज में ये बताया गया है कि DNA taken from an adult human cell contains DNA from both of its parents. So this is something the passage is suggesting and you can take it because 10 years cloning of non-human always successful. ये भी जरूरी नहीं है. Eggs of non-human are easy to obtain. Then human, this is also not suggestion by this is not a suggestion by the passage also, but the passage is suggesting the DNA cloning from an adult human cell contain DNA from both the parents. Okay. Now, yes, question number 54. The right option is D. Coming to question number 55. Which of the following is not given in the passage as a reason not to pursue human cloning? So what is not given? You have to take that. The answer is D. Exorbitant cost is not given as a reason. Okay, the other three are given as a reason, but the fourth one is not given as a reason to not to pursue human cloning. All right, so this is it. Now we are only left with one paper, which is the paper of 2021. We will be just discussing it shortly after a while. Okay, thank you. Please keep watching, stay tuned, and continue watching for paper of 2021, the Aligarh Muslim University paper for MBA entrance exam. All right, so let's now move to the Aligarh Muslim University 2021 MBA paper, which is the last paper of our discussion. And in this paper as well, the English section starts from question number 51. And similar to the other two papers, the first 5 questions are passage questions. We will come back to them after we are done with the grammar questions. Okay, so we start question number 56 onwards.
Question number 56 is, you have to fill in the blank. Okay. Now, although it seems dash, for some extreme dieters, eating more can actually help them lose weight since the body is assured that it is not facing a period of prolonged starvation. Okay, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ डाइटर्स के लिए खाना ज्यादा खाना उन्हें हेल्प कर सकता है. सो वी आर बेसिकली वी आर डूइंग अ काउंटर इंट्यूटिव. ओके, कि खाना से usually the notion is when you eat more food you gain weight, but for some dieters eating more can help you lose weight, and that is the counter intuition. Okay, so although it seems counterintuitive, so the right answer for 56 is B. Okay, now coming to question number 57. What is the synonym of the word curt? Now when we look at the meaning of the word curt, the word curt means, yes, the word curt means that somebody who is replying very briefly or very rudely. Okay, and the synonym of it is terse. Okay, TERSE. Mild होता है हल्का, ठीक है. Trite होता है कि बिल्कुल ओरिजिनलिटी से अच्छे से बोल देना, और एक बिल्कुल मतलब लाइक ये एस्टैब्लिश्ड बात है. टाइट ट्राइट हम उसको कहते हैं. स्पार्स होता है, when we look at the meaning of sparse means कि कोई चीज बिखरी हुई है. सो कर्ट टर्स का मतलब होता है किसी को रूडली जवाब देना. सो कर्ट का सिनोनिम है टर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. The language in Shakespeare's play seems obscure and inaccessible, lacking the dash of modern day authors. Okay, basically क्या है कि शेक्सपियर का जो लैंग्वेज है, okay, that language is belonging to the classical English, which most of us cannot understand. Okay, so the author here is saying कि जो शेक्सपियर का लैंग्वेज है वो इनएक्सेसिबल है, एंड जो आजकल के मॉडर्न राइटर्स का जो वो है, ओके, परस्पिशिविटी है, लाइक द वे यू स्पीक क्लियरली, एक्सप्लेन क्लियरली, कि आप लैंग्वेज को इनएक्सेसिबल नहीं बनाते, बहुत एक्सप्लेनेबल वे में बात करते हैं, उस तरह की जो राइटिंग स्टाइल है वो शेक्सपियर के पास नहीं था. सो सी इज द राइट आंसर. ओके, the next is question number 59. Which one of the following is correct? The horse and carriage is ready to move. The horse and the carriage are ready to move. The horse and the carriage are being ready to move. The horse and carriage have been made ready to move. Okay, the horse and carriage is ready to move is the right answer, because हम जो last verb हो, जो last noun होता है उसके साथ का वर्ड यूज करते हैं. ओके, उसके साथ का वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब. सो इन क्वेश्चन नंबर 59 द हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी टू मूव, बिकॉज हॉर्स एंड कैरेज क्या है, एक ही यूनिट है ना. हम टांगा गाड़ी की अगर बात करें तो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60. Find the part which has an error. If the teacher is good, the students will respond positive to him. Okay, in question number 60, positive नहीं होगा, positively होगा, positively to him. Okay, students will respond positively to him. Question number 60 का आंसर है D. D में error है, positive की जगह positively आएगा. Okay, now let's come to the next question. Question number 61. Flamingos were about to have died out until laws were passed to protect them. Choose the phrase that has the similar meaning. Died out का मतलब है खत्म हो जाना. So extinct. Extinction हो जाना उनका. Okay. So question number 61. The right answer is B. खत्म हो जाना, extinct हो जाना. Okay. Question number 62. Only after food has been dried or canned, it should be only after food has been dried or canned should it be stored for later consumption. Okay, it be stored for later consumption is right grammatically. C is the right answer. Question number 63. Although the weather in Bangalore's vineyard isn't dash to have a year-round tourist season, it has become a favorite summer resort. Isn't good enough.
इतना अच्छा नहीं है कि पूरे साल वहां पे टूरिस्ट आए, बट इट हैज बिकम अ गुड टूरिस्ट रिजॉर्ट. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 63 द राइट आंसर इज बी, गुड इनफ. Then when we come to question number 64, again error. Before TV, the common man seldom, never had the opportunity. Seldom और never साथ नहीं आते. Seldom का मतलब ही है बहुत rare. Okay. So the error lies in question number 64. The error lies in first part. अगर seldom आएगा तो never नहीं आएगा. Never आएगा तो seldom नहीं आएगा. Okay. First is the right answer. Question number 65. Again error. The value of the rupee declines as the rate of inflation raises. Okay. In question number 65, the answer is the rate of inflation raises up or rises up. Okay. The rate of inflation, as the rate of inflation raises or rises. Okay. So the right answer is fourth. Value of the rupee decline as the rate of inflation raises up or rises up. Okay. Fourth is the right answer. Fourth has the error. 66. Question number 66. If biennials were planted this year, they will be likely to bloom next year and every 2 years thereafter. Okay. If biennials were planted this year, they will likely, they will be likely to bloom. So they will be nahi hoga. They will likely to, they are likely to bloom hoga. They are likely to bloom next year and every 2 years thereafter. Not will be. Okay. So first is the right answer. Now coming to question number 67. Choose the correct order of the sentences marked A, B, C, D, E. Again, you have to put your mind to it. Make it a paragraph, concrete paragraph. The answer is D, C, B, A, E. First one is the right answer. Okay. If you have any discrepancies, you may let me know. Okay. Question number 68. Again, we have an unsolved jumbled paragraph. The right answer in this is C. You can read the whole paragraph together and make the sense out of it. Okay. So it is a paragraph about chopsticks, how chopsticks have been used, and what kind of, food we use with chopstick. Why by chopstick we eat what kind of food. So C herein is the right answer in question number 68. When we go to question number 69, चूज द सिनोनिम ऑफ प्रीकर्सर. प्रीकर्सर का मतलब होता है कि जो पहले आए, जो किसी से पहले मिल रहा हो, वो प्रीकर्सर है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 69, द करेक्ट आंसर इज फॉर रनर. कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए जो है वो पहले जा रहा है, बी उसके बाद में आ रहा है, तो हम कहेंगे ए जो है वो प्रीकर्सर है बी का, बिकॉज वो पहले जाकर चला गया. तो फॉर रनर का मतलब है जो पहले जाकर चला जाए वो प्रीकर्सर होता है. ओके. जिसकी जरूरत पहले है वो प्रीकर्सर. जब हम पढ़ते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर, तो प्रीडिसेसर और प्रीकर्सर सेम होता है. गुड क्वालिटीज मस्ट बी handed out, handed over, handed down, handed. Question number 70, handed down. पास ऑन होती है ना कि अगली जनरेशन को हाथ में देनी चाहिए. तो जब हम ए जनरेशन से बी जनरेशन में दे रहे हैं तो handed down, पास करनी चाहिए. Now question number 71 to 75. Okay, it is the question of, I think, logical reasoning, right? So I think in this paper, we only have 20 questions from the English part. I'll just see if we have any more. Okay, so we come back to question number 51 to 55. Now question number 51. Paragraph. Okay, a vexed problem facing us is the clamor to open more colleges and to reserve more seat for backward classes. But it will be a sheer folly to expand such facilities recklessly without giving any thought to quality of education imparted. If admissions are made far more selective, it will automatically reduce the number of entrants. This should apply particularly to new colleges, many of which are little more than degree factories. Okay, only then can the authorities hope to bring down the teacher-student ratio to manageable proportion. What is more, teachers should be given refresher courses every summer to brush up their knowledge. Besides, if their
if the college management increases their library budget, it will help both the staff and student a great deal. At the same time, however, it will be unfair to deny college education to thousands of young men and women unless employers stop insisting on degree, even for clerical jobs. For a start, why cannot the government disqualify graduates from securing certain jobs, say class 3 and class 4 post? Once the link between degrees and job is severed, at least in some important departments, it will make young people think twice before joining the college. Okay, so what can automatically help to reduce admission? It is basically in question number 51. The answer is selective admission. कि अगर आप selective admission करेंगे तो एडमिशन अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन था. क्वेश्चन नंबर 52. हाउ कैन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बी रेज्ड बाय how can the standard of education be raised? By admitting only the best students, only the students who need that job, who want to work for that job. Question number 53. How can the teachers be helped to brush up their knowledges? By arranging refresher course. Okay, this is what we read in the paragraph. The refresher course हमें provide कराने हैं. 54. The author is not in favor of restricting admissions unless degrees are delinked from jobs. जब तक आप degrees को job से delink नहीं कर रहे, तब तक आप education को admissions को restrict नहीं कीजिए. Question number 55. What does the phrase vexed problem means? Okay, question number 55. Vexed problem means is a problem which is coming again and again and it is irritating you. So an irritating problem is the right answer. So this paper so far had only 20 questions from the English. We'll just go through the next portion of this paper and find if there are any more questions in English. So this comes the maths. This is again the reasoning, question number 92, 95. I think in this paper, we only have 20 questions from English, ranging from question number 50 to question number 70. I'll just see the above questions. Okay, so this is GK ipso facto. Okay, so ipso facto is one question of English. Ipso facto का meaning होता है that by, ipso facto means that by the reason of by the same source. Okay, जो भी source है automatically ipso facto. 16 का answer है C, by the reason of, by the same source. Okay, then we don't have any other questions relating to English or language. This is GK again. This is maths. Okay, yes. So I think so far this paper only has 20 questions with respect to English portion. So we can stop here today. I hope you all have done these questions. I hope you have discussed previous year among yourself and you have already solved them. Wish you a very, very good luck for your upcoming AMU MBA entrance exam. Thank you. Stay tuned. Good luck for the exams ahead.